पुलकेशी नगर के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति हर साल की तरह इस साल भी संक्रांति और पोंगल के मौके पर राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चला रहे हैं। कल बीजेड जमीर अहमद खान ने इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक हुए थे और आज साबिक वजीर कृष्णा बहरेगौड़ा भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर बड़ी तादाद में यहाँ लोगों को पोंगल गिफ्ट यानी संक्रांति और पोंगल के मौके पर एक राशन किट तकसीम किया गया और इस मौके पर तमाम लोगों ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि हर साल अखंड श्रीनिवास मूर्ति इस त्यौहार को बड़े ही अहमियत के साथ मनाते हैं और तमाम लोगों के साथ मिलकर इस त्योहारों को वो मनाते रहें। न सिर्फ पोंगल और संक्रांति बल्कि दिवाली और रमज़ान के मौके पर भी इस तरह के किट वो तकसीम करते रहें। तकरीबन 12,000 से ज़ायद लोगों को ये किट तकसीम कर रहे हैं और लगातार पिछले कई दिनों से ये किट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चल रहा है। आइए जानते हैं इस मौके पर यहाँ के मुकामी लोगों का क्या तासुरात है, क्या कहना है, हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आज का दिन आके राशन किट जो है जो बांट रहे हैं, इसके अंदर पुलकेश नगर क्षेत्र के अंदर ये कहीं 20-25 साल से ये कार्रवाई कर लेके जा रहे हैं। एमएलए साहब जो है हर मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, तो उनको राशन का जो है बंदोबस्त अच्छे से इससे करके हर ईद को अच्छा ये कर रहे और आके ये जो है अच्छा हिंदू होंगे मुसलमान होंगे हर आदमी को लेके चलने का एमएलए एक साइकिलर एमएलए बोलते हैं ना, इन्हों अखंड श्रीनिवास मूर्ति जो है सर एमएलए सर जो है मुसलमान हिंदू इन्हें भेदभाव नहीं करते। हर आदमी एक इनकी नज़र में बच्चा हो बड़ा हो कौन भी हो अच्छा रेस्पेक्ट देना, बात करना, अच्छे एरिया के अंदर काना में भी डेवलपमेंट काम है, स्कूल का काम रंदे और कोई एजुकेशन के बारे में अच्छा इंटरेस्ट लेको अच्छा एजुकेशन का करके है, रोड का काम, सैनिटरी का काम और पानी का इनके परेड में जो अंदर जो भी है बीबीएमपी का काम अच्छे से अच्छा होकर करको है इन्हों। और आपको दूसरा मेन छोटा मोटा वो पानी शटडाउन हुआ तो पानी का थोड़ा समस्या आता है, वो सैनिटरी का थोड़ा वो गाड़ी ख़राब रहा तो वो सैनिटरी का एक प्रॉब्लम आता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा हो गया पूरा कंप्लीट नहीं, ऐसा छोटा मोटा इशू को बड़ा इशू कोई लोग जल के करते हैं, लेकिन ऐसा एमएलए हमारे को बहुत अच्छा गुड मिल के है हमारे एमएलए। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಟರಾಜ್ ಅಂತ. ನಾವು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವರು ಬಂದು ಶಾಸಕರಾಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೇ ರೇಷನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7,000-8,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಆದಮೇಲೂ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೊಡೋ ರೇಷನಿಂದ ಹಾಗೂ ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಅವರು ಇವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿಕಿನೇ ಕರೆಯೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದು ಶಾಸಕರಂತ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರು ಈ ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಾವು ಜನರೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಸುಜಾತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ನಮ್ಮ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಅವರಾದಂಥ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈದ್ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಂಜಾನು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ರೋಡ್ಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಮತ್ತು ಟಾರ್ ರೋಡು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸಿಕ್ ಇದಿದೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. On behalf of our Pulkeshi Nagar MLA Shri Akhanda Srinivas Murthy ji, I am talking today regarding his helpness in this constituency. He is helping every year in the time of Christmas, the time of Pongal and in the time of Ramzan. He is distributing nearly 15 to 20,000 of free ration kits to all the poor peoples in our constituency. We have 7 wards in our constituency. We have nearly lakhs of people, backward people who doesn't have food to eat. But
At this time, I'm very glad, I'm very happy to say that our MLA is helping out all the 3 festivals and he looks after all the people as a brother and sister. हमारे एमएलए सर जो है अच्छा गुड, लेकिन ये बार भी जो है अच्छी लीड से मारेंगे, 1 लाख लीड से मारेंगे, जीतेंगे और कांग्रेस का नाम रोशन भी करेंगे, कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन भी करेंगे. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಮಿಳ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ಇವ್ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ 10 வருஷமாக நான் பார்த்துக்கிற எம்எல்ஏ. வேறு எம்எல்ஏ யாருன்னா வந்தாங்கனாக்கா சரியாக செய்ய மாட்டாங்க. இந்த எம்எல்ஏ 10 வருஷமாக நான் பார்த்துன்னுக்கிறேன். நல்ல எம்எல்ஏ இவர். நம்ம ஏரியாவுக்கு நல்லா பண்ணுறாரு. எந்த நேரத்தில் போனாலும் நல்லா கான்டாக்ட் பண்ணுறாரு அவர் நம்மளுக்கு. எப்போ போனாலும் எந்த வீட்டு நம்ம போனாலும் வீட்டுக்கிட்ட அவங்க இருக்கிறாங்க, கூப்பிட்டாக்கா வராங்க இவங்க. நான் 10 வருஷமாக பார்த்துக்கிறேன். எந்த எம்எல்ஏ அந்த மாதிரி வேலை செய்யலை. இவர் இறங்கி நல்லா வேலை செய்கிறார். 10 வருஷம் இல்லை 50 வருஷம் ஆனாலும் இவர் தான் எம்எல்ஏ வரணும் நம்ம வார்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே. நல்லா செய்கிறாரு. நீங்களே பாருங்கள், எல்லா வார்டுலேயே பாருங்கள், நல்லா இதாக பண்ணுறாரு. ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இல்லை, ஏதோ அவர் மேலே ஒரு ப்ராப்ளம் வருதில்ல, நல்லா செய்கிறாரு. நல்ல எம்எல்ஏ இவர். கங்கடா ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ நல்லா வேலை செய்கிறாரு. என் வீடு கட்டி கொடுத்துக்கிறாரு. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ MLA ಅವರು ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 15,000 10,000 ರೇಷನ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸು, ಪೊಂಗಲು, ರಂಜಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ 7 ವಾರ್ಡುಗಳಿಗೂ 31, 32, 48, 78, 60, 61 ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ. ಇಂಥ MLA ನಮಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಮತದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಂಥ MLA ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಂಥ MLA ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರಸು ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಕುಶಾಲನಗರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 31ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ MLA ಆದರೋ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ, ಅದು ರಂಜಾನ್ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇರಲಿ, ಪೊಂಗಲ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳಿಸಲಾರದೆ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ವಲವನ್ನು ತಂದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸದಾ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪುಲ್ಕೇಶಿ ನಗರಕ್ಕೆ MLA मन्नीना मगा के बोलते हैं आर अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब. पुलकेशी नगर के मन्नीना मगा है वो. पोंगल के इस त्यौहार के अंदर लगभग 8,000 अफराद को उन्होंने राशन तकसीम किए हैं. और हर एक ईद में, जैसा कि हमारी रमज़ान की ईद हो, बकरीद हो, और रमज़ान की ईद हो, क्रिसमस हो, पोंगल हो, क्रिसमस हो, हर ईद में अपने अपने तजुर्बे से वो यहाँ की जनता की सेवा करते आ रहे हैं. दोस्तों, इलेक्शन करीब आने वाला है. आप सबको एक इल्तिजा करते हैं कि होने वाले इलेक्शन में तरह तरह के लोग आएंगे, कुछ बहके बातें करेंगे. आप उनके बातों पर कान ना धरें और उनकी बात ना सुने, क्योंकि पुलकेशी नगर का MLA ये दूसरी दफ़ा जीत कर हैं और यहाँ के लोकल हैं. हर लोगों का दर्द समझने वाले एक MLA हैं ये.